Hello children. In previous video we have completed the explanation. So in this video we will have a quick revision and we will complete page number 52 and 53 as well 54, that is worksheet. Okay, let's have a revision. So what do you mean by water? Water मतलब पानी, right? All living things need water. सबको ज़रूरी है. We need water for ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग फूड. हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग फूड, फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड ऑल्सो फॉर पुटिंग आउट अ फायर. नाउ एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. व्हाट दे डू? दे ड्रिंक एज वेल एज बाथ. ओके, एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. सम एनिमल्स लाइक फिश दे लिव इन वाटर. कहाँ रहते हैं? दे लिव इन वाटर. प्लांट्स टू नीड वाटर, है कि नहीं? प्लांट्स को भी वाटर चाहिए. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हम लोगों को पानी वेस्ट करना चाहिए क्या? नो, वी शुड सेव इट. हमें उसे आराम से बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा यूज़ करना चाहिए. ओके, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस. वर्कशीट. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इट द राइट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स. सो हियर आर सम वर्ड्स लाइक ड्राई अप, ड्रिंकिंग, a fish, main, put out, air. You have to tell me what answers you can write it here. Man cannot live long without dashed water. कि नहीं, water के बिना we cannot live. For what? Drinking. What is the answer? Drinking. Man cannot live long without drinking water. पानी पिए बगैर हम रह सकते हैं क्या? No way. So what is the answer over here? Drinking, right? D-R-I-N-K-I-N-G, drinking. We use water to dash a fire. We put out. We use water to put out a fire. Come to the next page. Come. If dashed is taken out of water, it will die. Tell me, who's she? किसको पानी से बाहर निकाल दिए तो मर जाएंगी? मछली, राइट? मछली जल की रानी है, बाहर निकालो तो मर जाएंगी. सेम वे, व्हाट इज द आंसर? अ फिश. इफ अ फिश, F-I-S-H, a fish is taken out of water, it will die. If प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड, दे, अगर प्लांट्स को वाटर नहीं दिया तो क्या हो जाएंगे? वो सूख जाएंगे, राइट? दे गेट्स ड्राई अप, राइट? D-R-Y, ड्राई. U-P, अप, ड्राई अप. इफ प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड, दे ड्राई अप. नंबर 5, वाटर इज एज नेसेसरी एज डैश्ड फॉर लाइफ. वाटर कितने जितना नेसेसरी है? एयर, AIR. Like in previous lesson we have learned air is necessary. अगर हमने ऑक्सीजन नहीं लिया, ऐसे सांस नहीं ली, so what will happen? We will die. Same way water, without drinking water we cannot live. Rain is the dashed source of water. Rain कौन सा source है? Main source, right? M-A-I-N, main. Rain is the main source of water. Next, come to question 2. Name the different purposes for which your mother uses water. Tell me, for what your mother is using water. मम्मी किन किन चीज़ों के लिए, किस काम के लिए वाटर यूज़ करती है? For washing clothes, for cooking food and also for watering the plants, right? Washing clothes, W-A-S-H-I-N-G, washing. C-L-O-T-H-E-S, clothes. Number 2, cooking food. C-O-O-K-I-N-G, cooking. F-O-O-D, food. Number 3, watering plants. W-A-T-E-R-I-N-G, watering. P-L-A-N-T-S, plants. Next, question 3. Answer the following questions. How do you get water in your home? हमें कहाँ से आता है वाटर? थ्रू टैप्स, है कि नहीं? हमारे घर में, सबके घर में नल है ना?
What do we say it in English? Tap. You have to write here tap. T-A-P, tap. How do you wash your clothes? We wash clothes with water. What you have to write? We wash clothes with water. Write W-E-B-W-A-S-H, wash. C-L-O-T-H-E-S, clothes. W-I-T-H, with. W-A-T-E-R, water. We wash clothes with water. Next, write two sources of water. Now students, we know rain is the main source of water. Besides rain, from where do we get water? Rain के अलावा हमें दो sources कौन से हैं? River and well. R-I-V-E-R, river. A-N-D, and W-E-L-L, well. River and well. Last, can you live without water? Tell me, what should be the answer? क्या हम water के बगैर रह सकते हैं? No. What you have to write? No. Can you live without water? No. Come here. Let's have fun. Drops of wisdom. So this you have to just read behind me. Save me or perish, says water. Do not let us drip, 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 warn the drops of water. Know our value fully, don't waste us, oh silly. Today we are here to make you fresh and happy. Tomorrow you will be sorry to miss us, oh sweetie. Okay, this you have to just read it. Come to the next page. Page number 54. Color the picture. You have to color this picture. Again I am telling you, don't use sketch pen. So you have to color this picture using pencil colors. Next, you have an activity here. Take 2 potted plants. 2 plants लेने आपको pot में लगे हुए. Label them A and B. एक का नाम क्या रखना है? A and दूसरे का B. Water pot A daily. और A नाम वाले प्लांट को क्या करना है? रोज़ रोज़ वाटर देना है. Do not water pot B. और B वाले को पानी देना है क्या? No. What do you see after a week? 1 week के बाद what you can see? The plant in pot A. Tell me what will happen to the plant in pot A जिसको पानी रोज़ दिया. How it will look? It will look fresh. Yes or no? It will look fresh. It will grow up. And what will happen to the pot B? It will dry up. So you have to write here. So what will happen to the plant in a pot A? The plant in a pot A will grow up and look fresh. कैसे दिखेगा? बढ़ जाएगा और fresh दिखेगा, green green. The plant in pot B जिसको हमने पानी नहीं डाला था will dry up and die, है कि नहीं? वो सूख कर मर जाएगा. So kids, you have to complete till page number 54. Okay? Bye bye. Write it in a good handwriting.